Hello everyone. So today the date is 16th July 2025 and the batch is MWF 9:30 p.m. So guys, during the last session we were doing trial balance, right? And then we have gone through with fixed asset also. Uh, how many of you having like 100% confidence for the accrued expense and deferred revenue and prepaid expense or accrued revenue? You all have confidence for that? Yes, How many sir. of you can you can raise your hands if you don't have confidence for that? Don't have. Okay. Confidence. Yeah, okay. Okay, so everyone is Lakshman. You have full बस confidence. ना सर मेरे बाकी है कॉन्फिडेंस नहीं Then what I'm बाकी है asking, जिसको भी कॉन्फिडेंस नहीं है वो हैंड्स रेज करे ताकि मुझे पता चले कि कितना पता नहीं चल रहा है. सो अब मुकेश जी आप ऐसा मत कीजिए. यू आर द एक्सपर्ट वन. ओके चलो. ओ बाबरी, ये कि 1 2 3 4. भावना जी आपको भी डिफर्ड रेवेन्यू के अंदर डेफर्ड रेवेन्यू में कंफ्यूजन है? थोड़ा सा। डेफर्ड रेवेन्यू. ओके फाइन चलो. मुकेश जी, लक्ष्मण आपको वर्चुअल हैंड्स रेज करना है, उसमें भी आप इनपुट नहीं दे रहे हो. सर नहीं आ रहा, ऑप्शन नहीं आ रहा है. तो उसके लिए कंप्यूटर से ज्वाइन करना होता है, मोबाइल से नहीं. मोबाइल में ज्वाइन किया और सुबह में तुम्हारे साथ बात की थी ना मैंने, तो मेरा बुक चल नहीं रहा है. ओके फाइन. ओके फाइन. रशिका जी आपको कंफ्यूजन नहीं है ना? कंफ्यूजन. वो 7 कैसे हो गए? अच्छा, मतलब सबको कंफ्यूजन है ही. वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन. सबके हैंड्स रेज नहीं करेगा, मैं समझा ही देता हूँ. ओके, दैट्स ग्रेट टू नो कि आप सबको कंफ्यूजन है डिफर्ड रेवेन्यू, प्रीपेड अक्रूअल एंड अक्रूड रेवेन्यू. सर मेरा क्यू बुक के लिए मैं सुबह में फोन किया, चल नहीं रहा है मेरा, पता नहीं क्या है. लक्ष्मण जी, इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको सुबह पर्सन का नंबर दे दिया हुआ है, तो सो दिया वी था. शुड नॉट उसने ऐसा बोला कि इंटरनेट प्रॉब्लम है, हो जाएगा, और साइकिल प्रॉब्लम है अभी. So we should not discuss that over here. Okay? उसे हम सेपरेटली डिस्कशन करेंगे. ऑलरेडी आपका नंबर वगैरह सब दे दिया हुआ है सपोर्ट वालों का. ओके. Here we are training. Okay? चलो then let me share my screen. So guys, are you able to see my Excel sheet? Yes. Okay. Yes sir. Okay, fine. So, in total, am I audible to everyone? Yes, sir. Okay, chalo. So, we have in total, there are 2 types of accounting. There are 2 types of accounting. Cash basis, full basis. Okay, and we are learning over here accrual basis accounting. Okay, in this there are 4 options.
3 and 4. The first one is deferred revenue. Second one is accrued expense. Third one is prepaid expense. Fourth one is accrued revenue. और इसके लिए हम एक काम करते हैं. There are two parts like here. The one is revenue part. Accrued deferred revenue and accrued revenue हम दोनों को साथ में सीखेंगे. 3 and 4 accrued expense and prepaid expense इन दोनों को भी हम साथ में सीखते हैं. So these are revenue part and these are the expenses. Okay. Now deferred revenue. Deferred revenue when it comes into the picture and why we have to record this transaction. ये चारों की एंट्री क्या होगी उससे हमें कंसर्न नहीं है. ये एंट्री क्यों करनी है अगर समझ जाते हो then you can easily do that transaction. आप जब एंट्री समझ जाते हो कि ये क्यों करना जरूरी है तो उसके बाद एंट्री आपको अपने आप आ जाएगी. तो हम पहले जाते हैं इजी वे में. कि जो आपको एकदम सिंपल लगे. हम जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीपेड में. ओके. प्रीपेड एक्सपेंस मतलब क्या होता है? एडवांस पेमेंट फॉर द सर्विसेज. टोटल 4 है. एक्सपेंस के अंदर 2 है और रेवेन्यू के अंदर 2 चीज है. एक्सपेंस के अंदर एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू के अंदर डेफर्ड रेवेन्यू एंड अक्रूड रेवेन्यू. ये हो गया एडवांस पेमेंट फॉर द सर्विसेज. एडवांस मतलब जो हमने अपने पहले से लेके रखा हुआ है. द अमाउंट व्हिच यू आर गिविंग इन एडवांस टू योर वेंडर्स. इट कैन बी फॉर क्वार्टर आल्सो, हाफ ईयरली आल्सो और ईयरली आल्सो. क्वार्टर मींस 3 month, half yearly 6 month and yearly that means 12 month. So let's say you have made the payment of for the software maintenance. Okay, and that's for 12 months and the amount is nearby we can say $18,000. So what will happen? Why you are recording? Why we have to record through prepaid expense? We can directly post also the normal entry. What we can do is prepaid expenses to soft. Okay, अगर हमें normal transaction अगर हमें post करना है then what we will do? Debit and credit. We are going to and accrual is transactions. Okay. पहला अगर हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना चाहें नॉर्मल तो नॉर्मल एंट्री अगर हम करेंगे विदाउट कंसिडरिंग दैट accrual basis accounting तो सिंपली क्या हो जाएगा कि भाई AMC डेबिट विथ 18,000 and like we are making the payment through bank or card or cash. We are not going to consider the cash, bank or card. Card means credit card. So this is your normal entry without considering accrual based accounting. But why we have to do entry with accrual basis? इससे क्या होगा कि अब समझो 18,000 जो है इससे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट माइनस में चला जाएगा उतनी अमाउंट से.
इज दैट करेक्ट? अगर मैं एक ही मंथ के अंदर ये एंट्री अमाउंट डाल देता हूँ तो क्या हो जाएगा कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,000 से सीधा डेबिट हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट आपका उतना कम हो जाएगा. तो if you go with the accrual based accounting, and why we have to go with the accrual based accounting? Because we are going to have the benefits of this payment for the next 12 months, and that's why what we have to do, the first entry we have to record as a prepaid expense. Okay, and this is your current assets. And how much amount we are going to record? 18K. And here, as usual, bank card or AP, AP means accounts payable, it can be. So the credit amount is 18,000. This is our first entry when we make the payment. Let's say the date is we are going to record the date. When you click Control plus, like if you select Control space bar, so column selection, and then Control plus, that means new column is there. Okay. Then let's say here date. So we are going with the current flow 7/16/2025. When we go with the normal transaction and when we go with the accrual based accounting. Now let's consider that the period was, or the period is starting from 8/1 to 7/31/2026. So by 8/31, which transaction we have to record? 1,000 we have to debit and 1,000 we have to credit. So which account we have to credit? We have to reduce the balance of this account, that is your current assets, because for the month of August you are utilizing the service. So that is your normal expense, software maintenance, debit with 1,000. Here credit is your prepaid expense, current assets. So what will happen at the end of the 8/31, that means 31st August, your account will show the balance of, oh sorry, it's a 1,500, because that is for 12 months. Okay, so 18,000 divided by 12 is equal to 1,500. So at the end of the August 2025, your prepaid expense account will show the balance of 16,500. Is that okay? And by the next 9/30, the same transaction we have to post. At that time, you will have balance of 18,500 minus 1,050. So when you pass these kind of 12 transactions, so at the end of 12 transactions, your balance is gonna be zero out. Is it clear to everyone for the prepaid? किसको पता नहीं चला है? Just raise your hands. लेकिन जब भी हम इनवॉइस मिला तो पहले इनवॉइस की एंट्री करनी पड़ेगी, राइट. उसके बाद So instead of a bank, you can, as I told you, I think you have not noticed. Either you can mention AP or you can mention bank, or you can mention credit card. Okay, clear? Yes, sir. Okay, so Karishma ji, Krishna ji, Bhavana Yes, ji, sir. Lakshman, everyone. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this one was for the prepaid. Now let's go for the accrued expense. Okay, accrued expense. This is advance payment for the services.
accrued expense मतलब क्या होता है कि the expense is due, but we have not paid yet. Let's say for the month of July, or for the month of June, we have to pay the salaries, but the salary date is 3rd or 5th or 7th or any of the following month. Hmm. And so here we are going to take the example salary expenses. In normal case, what we can record, like see, it is for June month salary and we have paid it today. Let's say today we are paying the salary for the month of June. So here salary and wages, this is the normal transaction. Okay, salary and wages 10,000 and bank credit 10,000. Is that clear? This is your normal transaction. This is your normal transaction and this is your accrual based transaction. So in accrual basis, normal transaction तो simply जब payment गया हुआ है at the same time we have recorded that, but for the accrual basis हम क्या करेंगे, and why we have to do this entry on 6/30, because this is the expenses belongs to the month of June. We have provided service to our customer during the month of June and we have collected the revenue also. So if we are getting revenue in the month of June and we have posted into the month of June itself, so your bottom line, see, whenever we use the word bottom line, that means always the bottom line of the profit and loss account. Okay, and for the balance sheet, it always we use both sides, assets and liabilities. Okay, so the bottom line, if we are providing services during the month of June to our customers and the revenue we are recording accordingly, so the bottom lines increase. And if we are not, and the what is like to a customer we have provided services or a product or anything, particularly this is for services. So if we are providing services, so we consume our manpower and we have to pay them their pay slab, like a pay stub, whatever it is. Pay stub, their paychecks or their payroll checks or salary. So if if we record that transaction or the payment in July month, so what will happen? The bottom line in June, that will go up with the profit, and in the month of July that will go down. Again, this is consistency basis also, like it's a consistency. We have salary entry in May month also, June month also. If we go with the normal transaction, okay, for the into the month of June, we record transaction payment for the month of May. In July, we record for the month of June, okay, and in August we may record for the month of July. But what else if we have like the similarity of transactions, just like in a salary payable for the month of May, it is $40,000. So we have paid in June month, and the pay stubs for the month of June, it is 60,000, and we post in July month. So what will happen? Your July month bottom line will show a lower number compared to June, because in June you have made a big sales, and that is the reason you have consumed more manpowers. So revenue will show up in June, but in July that will show a lower side. So the best practice is you have to record the expense into the same month for the services which you have provided in that month. So if you have provided service in May month, so you have to record that expense in May month, and if you are recorded
So obviously, you have made sales in June, so you have to record relevant expenses into the same month. So here we are going to record for the accrual basis. As of 6:30, we are going to record one transaction, and that is salary and wages expense debit. And we are going to credit accrued expense. Like say 15,000 we need to pay in the month of June, so we have recorded this. Now when you are making payment on 7th of 3rd of July, at that time you have to reverse out this entry, accrued expense. And why we have to reverse out, we already discussed this, right? For the reconciliation purpose. And also the payment entry on the same day. Whenever you reverse out this entry, you have to do salary wage debit, bank account credit. So the effect of balance sheet, this is your balance sheet item. Okay, your credit, your debit. So effect is 0. Okay, the effect is 0 out. At the same time, you wanted to record expense in June month, so you have recorded. And into the month of July, you have salary wages credit also, and you have debit also. So the net effect is 0. Clear? So what we wanted, the net of transaction is in 6:30 we have recorded expense. Yes. सर इसमें अपन सैलरी वेजेस ये जो बताइए सर, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है? जैसे आपने बताया ये सैलरी वेजेस अकाउंट टू अकाउंट पेबल, ऐसा नहीं हो सकता कि सर एक एक्सपेंसेस हो जाएगा और एक लायबिलिटी हो जाएगी, तो बैलेंस शीट में सैलरी एक्सपेंसेस हो जाएगा और अकाउंट्स पेबल आपका बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज हो जाएगी? ये भी ऐसे भी हो सकता है सर अक्रूड एक्सपेंसेस में? हाँ, अक्रूड एक्सपेंस इट्स द मेन जीएल, इट्स अ मेन जीएल। हम जो कंसेप्ट समझ रहे हैं वो इसका समझ रहे हैं, ठीक है? इफ आई यूज ओवर हियर सैलरी पेबल अकाउंट, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि यहाँ तो हम अक्रूड एक्सपेंस समझ रहे हैं, तो यहाँ पे सैलरी पेबल अकाउंट कैसे आया? नहीं सर, सैलरी पेबल अकाउंट कैन बी द अकाउंट ऑफ दिस। आप सर इसमें एक लायबिलिटी आएगी, बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा सर इसका? ये चीज तो आपकी सैलरी वेजेस इन बैंक अकाउंट, ये तो एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन हो गया। अक्रूड एक्सपेंसेस में अपन पहले मतलब अक्रूड का मतलब हो गया कि आपका जो पेमेंट से पहले अगर अपन एक लायबिलिटी रेस की भी। दिस इज योर लायबिलिटीज अकाउंट, नॉट एक्सपेंस अकाउंट। ओके ओके, मैं वही समझ रहा था कि जो नाम होगा नाम पे फर्क पड़ जाता है। ओके, इफ आई यूज हियर सैलरी पेबल तो आप समझते हैं कि लायबिलिटी अकाउंट है, बट हियर इज अक्रूड एक्सपेंस। अक्रूड मींस जो पेबल एक्सपेंसेस है, दैट्स कॉल्ड अक्रूड एक्सपेंसेस। ओके, यस यस, that is not your P&L item. Okay, that's your balance sheet item. Now clear? yes. So then what is the difference between provision and accrued expense? Both are same. Both are same. India and US. The difference is India and US. Provision that's we use in India, and accruals we use in US. नहीं सर, Okay. यूएस गैप के अंदर सर प्रोविजंस आपके इसमें अक्रूड एक्सपेंसेस में, अक्रूड इनकम के अंदर प्रोविजंस का कोई प्रोविजन होता है? गैप में तो आपके उसमें टैक्स से रिलेटेड या टैक्स जैसे इनकम टैक्स, सेल टैक्स हो गया, इनके अंदर प्रोविजंस वगैरह का ऑप्शन होता है। तो ये अक्रूड में ऐसा कुछ है अपने एज ए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से? मतलब किस चीज का प्रोविजन कह रहे हो? जैसे अभी आपने बताया अक्रूड एक्सपेंसेस और प्रोविजंस बोथ आर सेम। तो इसमें यूएस गैप के अंदर में भी प्रोविजंस वगैरह चलते हैं सर वहाँ पे?
हाँ तो ये जो प्रोविजन ही तो है अच्छा, अक्रूड। पार्ट ऑफ, ओके, ये पार्ट ऑफ प्रोविजंस, अक्रूड एक्सपेंसेस। हाँ अक्रूड इंडिया में हम प्रोविजन वर्ड यूज करते हैं, ओके, इंडिया के अंदर प्रोविजन वर्ड यूज करते हैं और यूएस में हम अक्रूवल्स यूज करते हैं। जैसे कि इंडिया में हम यूज करते हैं शायद सैलरी क्या कहते हैं सन्ड्री डेटर्स, यस यस राइट, यस सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, वहाँ पे एआर एंड एपी यूज होता है। यस, ओके ओके, यहाँ पे हम करंट अकाउंट कहते हैं, वहाँ पे चेकिंग अकाउंट चेक कहते हैं। चेक, यस ओके, यहाँ पे चेक का स्पेलिंग अलग है, वहाँ पे चेक का स्पेलिंग अलग है। ओके, so it's just a name difference. Sir, Is that clear guys? why can't we post an entry like accrued expense to bank directly? Why do we have to reverse the provision entry? Like the accrued expense entry and make the normal entry. Nikita, right? Yes. Okay, the reason behind that, the reconciliation purpose. What's happening? Let me add here one row. The serial number, you can say. So what's happening when we record one journal entry like this? So we will say this is the journal entry of 1112 number. What's happening? Yeah, 1112. And when I reverse out this transaction, so at that time I get this transaction 1112R. So if I have more than 20 or 30 transaction if I want to reconcile my accrued expense account now, so what I have to do, I have to just run the report of this account, export into Excel, control H and remove R from this, and if I just match now conditional formatting rule, duplicate value, highlight it. So in this way I can easily identify what are the transactions are already reversed out and what are the pending. And that is the reason we use reversal for that. So is that reversal mandatory in US? Because even if I make an entry of accrued expense to bank, that will automatically reverse my accrued expense. Accrued expense reverse out, that is fine. But if you have more than, see, in this way, you have nearby 30 or 40 clearing agents who work for you on a commission basis. So, but obviously we have to accrue their commission for the respective month, correct? Right. And now, Right. but yeah, and few of them we are paying on monthly basis, and to few of them we are paying on quarterly basis, and to some of them we are paying once they aggregate like once they reach up to 50K or 30K amount. So when we have that kind of scenario, so we must have to use this formula or this method. But if you Okay. have like a small transaction, so you can directly reverse out, you can remove this journal entry, and instead of here you can use accrued expense if you have very few transactions. But if Okay. you No, have big numbers of transactions, no, I understood that, but my question was, so there is no law that you have to reverse the accrued expense entry. You can do no, it according. So only for reconciliation purpose, you are giving it a reverse effect. But there is no law as such. yeah, there is no law for that. It's for Okay. the best Okay. practice and to save the times. Okay. Okay. I Because got it. in, yeah, in case if you have 30 or 40 transactions like that, and if you have to reconcile them every month, so it will take nearby 15 or 30 minutes. But using this method you can do it in less than 2 minutes. Got it. That's the And may I add on this, sir? uh, uh, Miss Krishna, Adam means I mean, one more reason we do this practice is sometimes we Mhm. just estimate the expense or income. Suppose the FD interest example, that is my the those but actually recovery or expenses might be more as compared to accrued. So then that can be also the reason कि we do the actual booking of the income or expense and we reverse out. So it will not affect our P&L account.
So sometimes like I have estimated accrued FD interest for 1 lakh and my actual payment was 1,10,000. So in this method, we can recognize the actual expenses. Yeah. Later, when Okay, so actually we make the payment or we receive the payment that time. And also what you can do, like we have done accrual for the 10,000 and the actual expense become 12,000. So what we can do, when we use check option, check module to record the transaction, you can reverse out 10,000 against the accruals and remaining 2,000 as a current month expense. क्योंकि आपसे 2 लोग ही अभी जैसे मैंने ग्रुप ही की है तो काफी लोग आपसे 2-3 लोग ही हो उसमें, ठीक है, तो 2-3 लोग पेंडिंग में है, तो जैसे से मंडे से आई गेस स्टार्ट हो जाएगा और having confusion, ठीक है, okay, Krishna ji, Got it. ना स्टार्ट नहीं okay, fine. And ओके नेक्स्ट किन लोगों को पता चल चुका है? अब ये चीज अगर नहीं पता चला है तो रेज योर हैंड्स. भाई द्रुमिल हाथ नीचे तो करो. ये सब कुछ ओके, अब किनको पता नहीं चला है? ओके, सो आई एम कंसिडरिंग कि पूजा, Yes, sir. do you understand this? Yes, sir. Yes, sir. Done then. चलो, अगर किसी को अभी भी पता नहीं चला हो, so I am here to explain you. एक्सपेंस पार्ट पता चल चुका? पक्का? Let's go with the next one. A little bit confusing. Deferred revenue. So who is going to explain me? Bhavana ji, can you please explain me this? How many chartered accountants here? Let me see that. The quantity is 21. Yes. Okay. How many chartered accountants are here? Bhavana ji, Nikita ji, then Hiren. Okay, then Joy, Krishna, Vaibhav. Okay, 6. Still there are a few missing. Vaibhav is there, Joy is there. Okay. Chalo then, shall we go with the deferred revenue? किन लोगों को पता नहीं है deferred revenue? Can you please guys raise your hands? At least मुझे पता चले. So I can explain them. See, अगर नहीं पता है so that is fine. मुकेश जी, आप तो हर एक चीज में आधे अद्धा कर रहे हो, आपको पता है फिर भी. पूजा, ओके. अरे मुकेश जी, बुरा मतलब, you can raise your hand. It's okay. पूजा, ओके. कृष्णा जी, ध्रुमिल, आसमा, भावना जी, दिव्या. ओके. लक्ष्मण जी, ओके. तो करिश्मा जी, ये सर मीनिंग पता है बट बस वो पोस्टिंग वाला भूल गए हैं. हे भगवान, कोई नहीं, चलो. सी, फर्स्ट वन, डेफर्ड रेवेन्यू क्यों करना चाहिए उसका रीजन पहले आप जान लो. जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, इट्स सी डेफर्ड रेवेन्यू एंड प्रीपेड, ये सब जो चीजें हैं ऑलमोस्ट रिलेवेंट है, मतलब समझने के लिए. द डेफर्ड रेवेन्यू इट्स अ पार्ट ऑफ
like the services which you are going to provide in a future. और उसका पेमेंट अभी आपको मिल चुका है, जैसे कि लाइक you own the company of IT and you are providing AMC for the softwares. Okay, so like the service AMC software, and it's for 3 months only. Let's say go with the short 3 months, and you are charging for that like dollar 6,000. You have raised the invoice. So in normal transaction, what we do in normal transaction, like see, the period is starting from 08012 8 9 10 up to 10/31st 2025. So in normal transaction, if like we are raising invoice now, okay, so here AR debit means accounts receivable debit with 6,000 and sales credit with 6,000. Okay, we record this transaction through invoice. Okay, so through invoice, not through JV. Okay, so we record this transaction in a normal case, but we have to provide them service for the next 3 months. तो कुछ भी कहीं पे भी प्रॉब्लम आता है, सो वी हैव टू यूटिलाइज अवर मैन पावर्स. अगर मैन पावर अगर हम जुलाई मंथ में यूज कर रहे हैं, अगस्त मंथ में अगर हम यूज कर रहे हैं, सो वी हैव टू पे देम. ओ भाई, what is the meaning of sales receipt, Mr. Dhiren? Can you please tell me? And why sales receipt comes into the picture? Sale, not sale on cash, sir. Cash sales. But we do not have that. But we do not have that question over here. No? Yes, I know, but we are recording deferred through sales receipt. Right? When you receive the amount, okay, receive the amount and raise the invoice. Both are different things. Okay, sir. Got it? Yes. If you receive the amount, so you can go through sales receipt. But you are just raising invoice. But you are not raising the payment. Okay, sir. So that you can do it. Okay? Okay. And it is not like that कि 801 से स्टार्ट हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, 801 को ही हम उनको इनवॉइस प्रोवाइड करेंगे और वो 801 को ही हमको पेमेंट करेंगे. In IT sector, 100% payment in advance. Okay? So that is the reason we have raised invoice, and that's why we have debited AR. If we go with the sales receipt, so we have to do cash or bank account debit and sales account credit. Yes, sir. Okay? Okay. So that can be the case. And in case if we receive in advance, so we can go through other things also, like advances from customer. We can record that transaction like advances from customer. We can credit that account. Cash or bank account we can debit. We cannot go through sales receipt as well. Instead of that, what we will do, we will raise the invoice on 801 for entire 6,000 amount, and only 2,000 we can recognize for that particular month. And that's why I was trying to explain you guys in a very simple way. Okay, so forget about sales receipt and everything for now. Just focus on this transaction, because again you gonna like stuck up with this transaction. Okay, now tell me, what is the journal entry I have to record if I go with the accrual basis? Can you please guide me? Could you please guide me this, like which transaction I have to post? No, it's free.
दिया फोन आपने फटाफट आपने Mr. Dhiren, who is going to give me the answer? If I go with the accrual basis, then what should I have to enter? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट to unearned revenue means deferred revenue because we receiving payment in advance and after we provide services. Thank you so much. And what should be the date? Date should be in July month only. Okay. कोई बात नहीं काम कर लो नहीं करते हैं कोई बात नहीं मुझे को परसेंट और बिजनेस में क्या होता है सर लोग then I will 761. Mega, instead of invoice, here we are going to instead of like a cash payment, we are going to consider over here as AR, as an AR. Okay. 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 So we are going to do AR debit with 6,000 and deferred revenue. Okay. Right? And now the month of August, what we are going to do? We have to recognize. Recognize means deferred revenue debit. Sales credit. Done. With 2,000. Why 2,000? Because this quarterly to 1 month entry we have to do. Okay. 8, 9, 10. 3 months. So 2,000. Sir, I have one doubt. After these entries in QuickBooks, for the payment, we will do the receive payment module, and for this journal entry, I mean deferred sales to AR to deferred revenues or deferred revenue to sales. For this, we will use the journal entry module, na? No. In QuickBooks, we should not do all these transactions manually, but you should aware about it कि backend की entry क्या हो रही है, because for the deferred revenue we have a separate module through which you can process this transaction through automation. Okay, so like for this, like accrued expenses or all these which you were explaining. So Yes. I just had the Sir, we confusion haven't like provided any services or goods, so why we are debiting account receivable? Because you are raising invoice. But You sir, are how can raising we invoice. raising invoice without providing services or goods? It is not like I'm talking about the AMC in IT sector. There are two types of transaction. Either you can do it in IT sector whenever you purchase. Have you ever purchased web hosting? Web hosting where we host the website, or we can say the software AMC. Any idea about it? No, Who sir. has asked the question? Okay. Yes, my sir. Vaibhav this question side. is just that whatever the entries we are doing in the Excel, so for this, like how we will pursue it into the QuickBooks, like journal entry and receive payment, or what? That is only my question. Whether it is for For the accrued deferred, expense or deferred revenue. Yeah. for the deferred revenue, we should not record any transaction manually.
system has already provided one module that is called revenue recognition, and that is available on the left side over here, revenue recognition. Are you guys able to see my screen? Yes, The sir. QuickBooks file, right? So here into the revenue recognition, manage settings and manage template. Into the manage template, these are the template. Template, that means it's a kind of command which are already set up, prorated by days and prorated by periods. Days means the 30 even if it is 31 days or 28 days month, though it is going to consider as a 12 month. Krishna ji, are you aware about this? And Vaibhav? No, sir, I was not aware about. So I think you have not gone through with all the videos or like this or with the live session. And Vaibhav, do you? Yes, sir, I am aware about it. Okay, so using this module, you can easily record the deferred revenue transaction, and no need to like we do what do we say, do the manual transaction. But yes, what are the journal entry behind the scene? As an accountant, we should be aware about it. Correct? Got it. And Okay, so the see, same, and the like for the same, like for the accrued expense and revenues also we will use the template, or how? This is for this deferred is for revenue. the Deferred this is for revenue. revenue. Okay, so Yeah. that is for revenue recognition. That means for the deferred revenue only. For the Got it. prepaid expense, you can, okay, so for the prepaid expense, in a smart way, we can use recurring transactions. Because for the particular transaction, we have to record the same entry again and again. Like if you are paying any X amount, like a 12,000 amount for the next 12 months. So every month you have to record one transaction of $1,000. So what you can do, you can create recurring transaction with the number of 12 occurrence. So, and you can set the date and interval. Yeah, Do you know from where? yeah, that I know. Recurring transactions stuff templates के through. And for accrued expenses, what we will do? For the accrued expense, you have to reverse it out. And for the accrued expense, there is no transaction. You have to record only one transaction for the accrued expense. Okay, so we will not do that a journal entry and then reversal. No. So we will only No, do no. the payment entry, right? Actual payment entry. That's what I'm asking. Here in QuickBook, how we will pursue? Let me show you. You have to pay the salary for the month of June. But okay, but you have not paid during that month. So the first transaction you have to record through this journal entry. Journal entry number 1, okay? Okay, salary and wages, debit. It's let's say $12,000. Krishnaji, for the accrued expense, we have recorded so many transactions. And we have done a reconciliation. I'm just getting a little bit confused. First, we will pass the journal entries, and then we will reverse the same journal entry, and then we will recognize the actual expense. That is what I wanted to I wanted to be sure. That we have to do. Actually, when we go with all this together, na. Okay, so here you have to record accrued expense. And this is the part of balance sheet, not expenses. Okay. This is the transaction we have recorded. Now, by the
16th of July, you are making the payment. Hmm. What we will do? You go with this transaction. Okay. And Here we it will is showing only reverse one. data, right? Yeah. Here we have option to reverse. Okay. So we got R. So this transaction is reversed out by the following month, but we are like if we are making payment today, so we are selecting this. So here the journal entry effect is nullified. Now you are making the payment. So payment you always use check because that was relevant to your balance sheet item, correct? Yes, got it. And here we have to record the normal transaction of salary and wages. To bank. What was the amount? It's a 10,000, right? Yeah. Yeah, it's a bank. So save and close. Now here we are going to run our reports to check the everything. So here we are going to run first of all profit and loss account, and profit and loss account we are going to run for 2 months, June and July, to show you the transaction and their effect. Let's go with the switch to classic view. And in second time we are going to run balance sheet. Display column by month. So we will have two columns, okay? June and July. So we have to record the expense in June. So through journal entry we have recorded. Into the month of July, we do not have any expense, so it's a zero out. At the same time, in balance sheet, as of today, accrued expense balance is 0. Why? Because we have reversed out. Okay, so in a month of June, we have created revenue, liability, and into the month of July, we have reversed out that. Okay, okay. Here we have created liabilities, and in July month, the liability is 0 out. So if you guys see now, in this month, there is no, in July month, there is no accrued expense, there is no expense. Got it? Because the transaction is reverse out. For the with the first transaction, we have created liability. By the second transaction, we have reversed out the liabilities, and by the third transaction, we have paid the expense. So here you can see two entries. Hello. Yes. Yeah. Sir, these transaction will be recurring every month, na? Yes. The liability will stand for the next month. Correct. Yeah. So, Krishna, your doubt has been clear. Can I ask my? Yeah, you can ask. Okay. So, sir, I am having still doubt for the recognition of revenue, not the concept I'm asking about, but for the recording purpose. As you said, it was we are not supposed to be pass any entries for recognition of revenue. So, what was that template? How it works? Okay. So are you guys done with the accrued expense? So we can go with the recognition of revenue. So this is we were doing accrued expense. If you go with the recognition of revenue, so we have to go here. So Krishna, your question is over now for the accrued expense. Yes, sir. Okay, so for the recognition of revenue, how to do it, right? You guys want to understand. So here, first of all, you have to create manage template. So you need to create one template, or you can say one command. Let's say we are not going with this. I'm just going to create a new one. A template name is we can say AMC 12 months. Recognition straight line even across periods. Straight line, that means by the month. And recognition frequency, it should be monthly, and recognition period in month, so for the 12 month. Everyone, this three clear? Yes. Yes or no, guys? Yes. Yes. Yes, sir. Okay. Okay, so this one is clear. Now we are going to save this.
So we have created one command, this one. Now I want to create one service. Now I'm going to create one service over from here. So from where I can go to the service, from here, product and services, and the second one is from here also. Okay, so let's go from here. Now I would say AMC 12 months. Okay, type. There are 4 types of product and service. It's a service, inventory item, non-inventory item, and bundle. Bundle means more than one inventory item you can club into that. Inventory or service, whatever it is. Then services category IT support. This basic info. I sell this item to. Okay, so like say AMC 12 months. Price we can say it's a. Let's make it income account sales. So saving close. I have created one service item. Now what I need to do, I need to assign product or services. I need to assign template to product or services. So I'm clicking here, product and services. Which one is? Let's say where we have AMC 12 month. Okay, I selected one. Now revenue recognition template. That means the template, this one which we have created from here, AMC 12, and liability account what it should be. So deferred revenue. Okay, this one. Save. Which 3 tasks we have done? First, we have created template. Then we have created product, and then we have assigned that product to that particular template. Now, the work is not done yet. Now, whenever you raise invoice, let's say plus new invoice. Let's say John Doe. Okay. This is your invoice template. Here you can select AMC 12. Okay. Here what is it? Revenue recognition hidden. It is showing hidden. But how to enable that? So one option, service date. It's a big option, not a small option. When I enable this, you will see service date option over here. Okay. Now I'm going to select the date from when we are going to provide the service. So let's say I'm considering 1st of August. Here before view option was not there, but it is now. When I click on here I can see revenue recognition module, recognition date, amount recognized, liability account balance, and income account. Guys, clear or having doubts? कृष्णा जी, ये करने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको सेव एंड क्लोज ही करना है. ओके, अंडरस्टूड. बाकी सारी प्रोसेस जो है वो क्विकबुक्स सॉफ्टवेयर अपने आप कर लेगा. क्लियर? सर यस. सर यहाँ पे हमने फर्स्ट एंट्री आई मीन इनवॉइस इशू किया, ऐसे अज्यूम करके वी हैव यूज द इनवॉइस मॉड्यूल. व्हाट इफ अगर पहली एंट्री हम लोग को पैसा मिला है, मतलब बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेफर्ड रेवेन्यू है, तो फिर इन दैट केस कैसे टेम्पलेट यूज होगा?
तो उस केस में जैसे अभी हमने धीरेन जी ने बताया, उस केस में हम यूज करेंगे सेल्स रिसिप्ट। अच्छा ओके, कुछ ओके चेंज नहीं होगा, इनवॉइस की जगह हो जाएगा सेल्स रिसिप्ट। क्योंकि जब इनवॉइस आप रेज करते हो एट दैट टाइम वी हैव जर्नल एंट्री अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट एंड डेफर्ड रेवेन्यू क्रेडिट। जब आपको पेमेंट मिल चुका है, ओके, और आपने इनवॉइस रेज नहीं किया था, तो फिर हाँ इनवॉइस रेज करने के बाद पेमेंट की भी एंट्री करना, मतलब मल्टीपल एंट्रीज करने से बेटर है कि सिंगल एंट्री के अंदर आप पूरा स्क्वायर अप कर सकते हो। ओके ओके, ओके अभी हमने जॉन डे लिया था, हम लेते हैं जैन स्मिथ एंड यहाँ पे हम जाते हैं सर्विस डेट डालते हैं। इस बार हम डालेंगे सितंबर से। प्रोडक्ट दिस वन, बाकी सारी चीज अपने आप आ गई है। सेव एंड क्लोज। अब हम रन करेंगे बैलेंस शीट। ये है जून मंथ की, हम यहाँ पे कर देते हैं पहले तो यहाँ पे हम कर देते हैं ऑल डेट कॉलम बाय मंथ रन। डेफर्ड रेवेन्यू 36,000। ओके, अब ये जो है सिलेक्ट ऑल डेट 36,000 के अंदर रिकग्निशन कब से स्टार्ट होगा? अगस्त मंथ के अंदर सिर्फ एक एंट्री होगी 1,500 की, बट बाय द फॉलोइंग मंथ सितंबर मंथ के अंदर 2 एंट्री होगी। क्योंकि ये जो था इसका पीरियड कौन सा था अपना? अगस्त से जुलाई। दूसरा जो था उसका है सितंबर से जुलाई, सितंबर से अगस्त। नाउ लेट्स गो विथ हियर, शायद यहाँ पे उसका रिपोर्ट शो करते हैं, या सी रिपोर्ट्स। ओके, यहाँ पे डन। फर्स्ट मंथ जो है अगस्त मंथ में सिर्फ एक एंट्री रिकॉग्नाइज होगी 1,500 की। उसके बाद सेकंड मंथ के अंदर सितंबर में 2 होगी, एक जॉन डॉय की भी होगी और जेन स्मिथ की भी होगी। अब ये सारी एंट्रीज जो है वो ऑटोमेशन के थ्रू अपने आप पोस्ट हो जाएगी, हमें पोस्ट नहीं करनी है, बट हमें पता होना चाहिए कि बैकएंड में एंट्री कौन सी होती है। ओके यस एवरीवन? सर यस। सर ये तो सिस्टम इज डूइंग ऑल द एंट्रीज ओके, बट इन फ्यूचर अगर टिल द कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज फॉर एनी रीजन अगर हमें एनी अमाउंट रिफंड करना पड़ा तो हम कैसे एडजस्ट करेंगे यहाँ पे? तो फिर हमें जो आपका इनवॉइस है आप उन इनवॉइस के अंदर ही चेंज कर दोगे तो एंट्री अपने आप इफेक्ट में आ जाएगी। समझो वो मेरा लास्ट ईयर का था तो लास्ट ईयर में जाके इनवॉइस मॉडिफाई करना पड़ेगा? नहीं, लास्ट ईयर का अगर है तो फिर आपको करंट मंथ में ही मॉडिफाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि लास्ट ईयर का होगा तो आपने फाइनलाइज कर दिया होगा वो। हाँ तो फिर करंट ईयर में उसको कैसे, मतलब उसके लिए कोई स्पेसिफिक एंट्री पास करेंगे? नहीं तो ये तो कंटिन्यूएशन होते जाएगा ना, उस बैलेंस को नलीफाई करना पड़ेगा ना। हाँ, तो जितनी एंट्री आपकी एक्स्ट्रा है उसको आप जेवी के थ्रू सेट कर सकते हो। हाँ तो जेवी के थ्रू इसको जीरो करना पड़ेगा और पेमेंट हो गया होगा तो सेपरेट एंट्री पास हो जाएगी उसकी, या हाँ, फिर पेमेंट की तो अलग से पास हो जाएगी। सर उसमें अपन रिवर्स नहीं कर सकते उस एंट्री में से कितने अमाउंट से? ये जर्नल एंट्री जो है, ठीक है, जैसे कि 831 को ये एंट्री पास होगी, तो जब एंट्री पास होती है आप वो एंट्री को रिवर्स आउट कर दो। जो भी एंट्री वगैरह पास हुई है वो एंट्री को आप रिवर्स आउट कर देना। 831 को एक जर्नल एंट्री पास होगी, वो एंट्री को आप रिवर्स आउट कर सकते हो। सर डिपेंड करता है कि वो तो अमाउंट पे डिपेंड करता है, जरूरी नहीं होता है कि आपका 6 अमाउंट में हो या 2 महीने का या 15 डेज का, ऐसा कुछ रहता है। तो डिपेंड अमाउंट पे डिपेंड करता है कि रिवर्स 6 महीने का या 3 महीने का हो सकता है। हाँ हाँ, तो सही बात है, वो अमाउंट पे डिपेंड करेगा कि 6 महीने का 3 महीने का, उस हिसाब से आप अंदर क्रिएट कर सकते हो। तो आपको हाँ, क्वार्टरली बस पोस्ट करना है, और वो रिवर्स हो सकता है। जर्नल एंट्री कोई भी रिवर्स हो सकती है ना, जैसे अभी हमने अक्रूड एक्सपेंस की ना, वैसे रिवर्स कोई भी एंट्री हो सकती है।
एंट्री रिवर्स का ऑप्शन तो हर एक के पास है। कोई भी जर्नल एंट्री अगर हमने रिकॉर्ड की है, ठीक है, अगर उसको रिवर्स करनी है तो कर सकते हो। नहीं, यहाँ मैं जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी एंट्री हो, मुझे यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आता है रिवर्स का, मुझे रिवर्स करनी तो मैं कर सकता हूँ। वो जो ट्रांजेक्शन पोस्ट होगा वो जर्नल एंट्री के थ्रू ही पोस्ट होगा। ओके, या कुछ और कोई कंफ्यूजन इसका? सर सपोज ये सर्विस अगर 6 या 8 महीने के बाद बंद हो जाए तो? शिवानी जी, हाँ, तो भावना जी ने वही क्वेश्चन किया ना कि उससे फिर जो भी ट्रांजेक्शन पोस्ट होते हैं उससे हम रिवर्स आउट करेंगे। अच्छा, तो सपोज 6 महीने के बाद बंद हो गए तो 6 ट्रांजेक्शन रिवर्स? हाँ, ओके। सर्विस डेट चेंज नहीं करनी है ना? सॉरी, सर्विस डेट चेंज नहीं होगी ना? नहीं, सर्विस डेट चेंज नहीं कर सकते ना आप, क्योंकि अगर 8 महीने हैं, ठीक है, तो फिर आपने अगर करंट मंथ का आप मंथली मंथली क्लोजिंग कर रहे हो तो आपने 2 महीने पहले कुछ अलग बैलेंस दिखाया होगा लायबिलिटी के अंदर। अगर कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है वो फ्यूचर में हुआ है तो इसकी इफेक्ट तो हमें फ्यूचर में देनी होगी ना, या राइट? राइट। Any more questions, guys? No question? Okay. Let's go with the last one. Accrued revenue. चलो, डिफर्ड रेवेन्यू जिनको पता चल चुका है वो अक्रूड रेवेन्यू समझ जाएंगे, क्योंकि डिफर्ड रेवेन्यू ऐसा है, काम नहीं किया है और इनवॉइस रेज कर दिया है या पेमेंट आ गया है, ये उसका उल्टा है। काम किया है बट इनवॉइस भी नहीं किया है और ना पेमेंट आया हुआ है। तो लेट्स से कि कॉन्ट्रैक्ट था हमारा, मतलब वर्क कॉन्ट्रैक्ट फॉर only 15 days and the amount is 15,000. Start date 26 June to July 10th. Okay, for the 15 days. Now, अगर normal and we have received payment on 7/16/2025 and the amount is 15,000. So, in a general case, what we can do on 7/16, let's say by the 7/10 we have raised one invoice, yeah, debit 15,000 and sales credit 15,000. We have received payment of 7/16/2025. Bank debit 15,000 and ER credit 15,000. This is the journal entry, means general entry, not general entry. We aware about it, correct? Now, if you are managing the books on accrual basis, so so for that, on the date of 7th, not 7th, 10th, we have to record first transaction on 6/30. The first transaction is invoice. Sorry, not journal entry. Okay. क्या होगा इसका एंट्री? Accrued revenue. Amount is $15,000.
Guys, amount is, कोई कुछ तो बोलो. $15,000. 2,000. 15,000. How much? $15,000. $15,000 क्यों आएगा मुझे बताओ. 630 को मैं अगर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो $15,000 क्यों आएगा. सी 626 से लेकर 636 का आपका इनकम कितना हुआ. 5,000. करेक्ट. Yes. एंड 71 से लेकर 710 तक का कितना हुआ आपका. 10,000. 10,000 हुआ ना. Yes, yes, yes. ये 5 डेज है, ये 10 डेज है. क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग. इतना सिंपल तो है. 15 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है. 5 डेज जून मंथ के, 10 डेज जुलाई मंथ के हैं. नाउ फॉर ओके, सो फॉर 630 अब बताइए कितनी अमाउंट आएगी यहाँ पे. 5,000. ओके. और अब नाउ आई एम रेजिंग इनवॉइस ऑन 7/10. तो मैं क्या करूंगा, 7/10 को है ना, ये एंट्री जो है इसको मैं रिवर्स कर दूंगा. इसको रिवर्स क्यों कर दूंगा, क्योंकि जब मैं इनवॉइस रेज करूंगा तो इनवॉइस कितने का रेज होगा पूरा. 15,000 का. राइट. जब 15,000 का रिकॉर्ड करूंगा तब मैं क्या करूंगा, पूरा AR डेबिट करूंगा, क्योंकि मुझे कस्टमर को तो पूरा इनवॉइस देना है ना. करेक्ट. और यहाँ पे क्या आएगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट विथ 15,000. बट इन एक्चुअल टर्म्स के अंदर सेल्स कितने का बुक हुआ जुलाई मंथ में. 15,000 माइनस 5,000. मतलब जुलाई मंथ का हो गया 10,000. ओके. जून मंथ का हो गया 5,000. क्लियर. मुकेश जी, रशिका, मेघा, वैभव, शिवानी, Yes, sir. Yes, sir. everyone clear this. Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. Jay. Sir. Clear ना. Yes, yes, yes. Okay. दिव्या जी. And Nikita ji, all good? Yes, sir. Okay, fine. So these are 4 transactions which make you confused every time. ये हमेशा आपको confuse करेंगे. Now guys, do you aware about how to prepare the prepared schedules? Have you considered that? ये जो अभी चल रहा है, it's all are we can say the revisions. See, this is the format of prepared schedules. Bill date, then amount and period. Starting that में bill date that में, और starting date इसके अंदर mention नहीं है, so we are going to consider that it start from June itself. So 7,200 divided by 12 is equal to 600 per month. So here you can mention 600, 600, 600, and the balance amount at the end of the year. How we can get it? 7,200 minus all this recognition. So why we are creating this schedule? This one all aware about it, right? You already discussed this. So this amount for the month of June, or let's say for the July, double to 5.33. There should be one transaction of expense debit and prepaid account credit. So your prepaid balance at the end of the July should be this one. We have done this for the month of June. How it is? See, this one minus this is equal to this is your prepaid expense balance in balance sheet.
and by the next month, at the end of July, you will have this balance. This minus this is equal to this. Guys, am I audible? Yes, yes. Okay, fine. Mukesh ji, everything is all clear now. Again, guys, for the deferred revenue, you should not create any journal entry. The system takes effect by itself. Okay? Okay, sir. Hmm. Mhm. हम्म। कितना उसमें लिखा हुआ है So, guys, on demand, what would you like to learn? Anything else? There are so many other things also, but on demand, anything you would like to learn? मुकेश जी ने तो हाथ हैंड रेज किया है. बट किस चीज के लिए कहा है वो बताओ मुकेश जी, बताइए क्या हुआ. सर सभी चीजें समझ में आ गई, बस एक मेरे को वो एक मेरा टास्क था सर, वो मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है. अरे भगवान. आप लेक्चर एंड होता है तब बता, लेक्चर स्टार्ट हो तब बता, तो पूरे लेक्चर में सबको बता दूं मैं. ठीक है सर, अब की बार जब क्लास होगी तो मैं स्टार्टिंग में बोलूंगा. स्टार्टिंग में बता देना, सो सबको लाइव उसका प्रैक्टिकल ट्रांजैक्शन मिल जाएगा. इट्स ऑल अबाउट ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन, करेक्ट? यस सर. हाँ, तो मुझे स्टार्टिंग से बता देना, सो दैट वुड बी लाइक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन, ऑल अवेलेबल हियर. बिल्कुल सर, उसमें 2-3 ट्रांजेक्शन दिखानी है मेरे को, ई कॉमर्स की एंट्री और उसमें एक्सपेंसेस का और उसमें पेमेंट का. कोई बात नहीं, we'll do it by the next session. So get ready with your accounts and everything. We'll do the entries and everything. We'll do on my screen and the transaction posting on your screen. Okay? ओके सर. सर ये एक्सेल ग्रुप में शेयर कर दोगे क्या, जो अभी आपने डाले थे एंट्रीज पे? Yeah, sure. I'll do that. ओके सर ये भी शेयर करनी है और सर ये सीट नंबर फर्स्ट वाली भी शेयर कर देना सर. हाँ, पूरा का पूरा मैं शेयर करता हूँ. इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, देखिए. ठीक है सर. When we make sales credit, accounts receivable, sales account, when we receive partial payment, ये मतलब बेसिक लेवल से भी सब लिखा हुआ है. तो दिस विल हेल्प यू. व्हाट इज मतलब, ओके, ये अलग है पूरा. सेल्स कमीशन, ओके, फंड रेजिंग, हाँ ये भी आपके लिए काम का रहेगा. डेबिट क्रेडिट सब लिखा हुआ है. एंड दिस वन थिंग ये काम का आपको रहेगा. ओके ओके ठीक है सर, थैंक यू. आज हम थोड़ा जल्दी सेशन खत्म करते हैं. एंड बाय द नेक्स्ट सेशन मुकेश जी, आपकी लाइव फाइल जो है अमेजोन की, हम वो सीखेंगे. बिल्कुल सर. ओके, प्रिपेयर शेड्यूल आप okay, I'll share that after the session. Done? Okay, sir. Shalom, guys, everyone. Thank you so much for your time and everything. Okay. लेट ज्वाइन करके बची क्या वक्त है. So guys, should I close the session now?
Okay then. If anyone having any question, then they can ask. आपने मुझे बोला कुछ? हाँ, आप ही को कहा। लेट ज्वाइन हो गए, छटक गए ना आज, वरना अच्छी खासी हो जाता ना आज। नहीं, पर अच्छा खाना हुआ। बाकी था। खाना तो जैसे कि नहीं, हम तो यहाँ पे ताज में बैठे हुए हैं ना, खाना बाकी हमारे। 1.5 घंटा बैठना है, मेरे से रहा नहीं जाता इसके लिए। ओके ओके, फाइन फाइन। सर, चलो। हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन बस ऐसे ही आ गया माइंड में कि हम बताइए। जो अक्रूड एक्सपेंस या रिवेन्यू के जो एंट्रीज करते हैं, तो कंसेप्चुअली तो आई अंडरस्टूड, बट ऐसे मेरे माइंड में जैसा आ रहा है कि जैसे हमने 30 जून को वी हैव डन द एंट्री एक्सपेंस टू अक्रूड एक्सपेंस. So for that month we have recognized the particular amount, suppose 10,000, and in July, suppose on 10th July we are reversing that entry, and because we are actually making the payment for that expense on 10th July, so now for the June month we have recognized the expense to reflect the true and fair view, I mean the financial statements actual position, and in July we have reversed out that entry, and now again we are recognizing the transaction based on the actual amount, I mean actual Full amount. Full amount, yeah. So again then in July also my financial statement will reflect that amount with 10,000 in expense part, right? So in June, तो June also expense is going into the P&L. कहाँ से होगा कृष्णा जी, कहाँ से होगा? क्योंकि हम जून की जो हमने एंट्री रिकॉर्ड की थी, वो एंट्री तो हमने जुलाई में रिवर्स कर दी, तो आपका एक्सपेंस माइनस में चला गया। अच्छा, अब जब आप एक्चुअली हाँ हाँ हाँ, ओके गॉट इट, ठीक है, मेरे को हाँ हाँ ओके, क्लियर ना? या क्लियर। ओके, करिश्मा जी आपका Yes, sir. क्वेश्चन? नहीं सर, क्लियर है। ओके, चलो देन, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। Good night. Good night, sir. Thank you. Bye. Bye, sir. Thank you. Yeah, bye.